Good evening, everyone. Welcome all of you once again. Very, very good evening. So, yes, good evening, Atharva and everyone. Yeah. All right, guys. So, ये जो session है, this session was planned for yesterday. I was not able to take this session yesterday. That's why we are doing this practice at 8:30 p.m. today. And today, 6 p.m., we did a practice session on pericyclic reactions. Okay. So, just like this, I have added more session, more live classes on my channel. All you have to do is just visit the live section and click on notify me because then you will be notified about the classes, and we are almost daily going to have a session. Okay, so yeah, if there are any changes I will inform you on the Telegram group. If you have already not joined, please do. You will find the link of the Telegram group in the description. Okay. Yes, everyone has joined. Let's start without any further delay. We are going to continue our discussion on organic reagents, name reactions, mix. Okay, so this is our first question, and guys, this is coming from the paper of February 2022. So you see that English and Hindi lines were all mixed in that paper. So the first line, the question is asking you, you just have to say the correct sequence of reactions. Okay. Good evening, everyone. So just the correct sequence of reaction is asked. All right. Yeah, just try to do this. Yes, everyone. All right. Yes. So, what can we do when we are given an acid? Now, this is a Lewis acid only, and this is your acetal. So, the acetal must react with the acid. Yes, if it is a protic acid, then how it is going to react if it is a Lewis acid? Mechanism is almost similar only. Okay, so let's just try this. Let's say that the essential 4 got connected over here onto this oxygen. So this bond is going to open up one possibility. O essential 4 got connected like this. Tin has a minus charge because there is extra chlorine over here, and this is going to form an oxonium ion, CH2OBZ. Oxonium ion is formed like this. Okay, so what is going to happen next? I will have to write this oxygen over here, let's say.
Alright, this oxygen has got a positive charge. And one more methyl over here onto this carbon. So there is a possibility that this double bond is going to attack over here and cause cyclization. That is similar to Prince reaction. If that happens, we are going to get a 5-member ring in this way. 1, 2, 3, 4, 5. No, actually we are getting a 6-member ring. Let me just check the carbons once. Yes, guys, try it out as well. Let's see how it goes if we open it like this. Alright, somewhat like this. So this double bond with this is a closer one. So this double bond is going to attack over this oxonium ion, which is the Prince reaction. So let's write the double bond on this side. In this way. If that happens, it's going to give you a 5-member ring. 1, 2, 3, 4, 5. Where there is a methyl on this carbon, another methyl over here. Okay, one more carbon. OSNCl4. And here you get a positive charge. CH2OBZ. Okay, so this is how you get this molecule. Now, tin has a negative charge because it is having excess of electrons. So it's going to give back the electron density, and looks like that this methyl has transferred. Okay, like this. So when you are actually, see, this is just like a pinacolone reaction. When you have two alcohols, one of the alcohols has left, giving you a carbocation like this. Okay, there is a carbocation like this, one of the alcohols has left. So what happens? This bond pushes back and one of the methyl is going to shift. That is our pinacolone rearrangement. So here you don't have the alcohol, और यहाँ पे क्या है OSNCl4. It is like this. So when this bond is opening up, this methyl is shifting over here. So we can just say कि ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखने वाला है. A 5-membered ring. एक और मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे. And this is going to be a carbonyl. Although there is one glitch over here. What is that? कि एक हाइड्रोजन भी है इधर, तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है या मिथाइल शिफ्ट हो रहा है? आई थिंक द हाइड्रोजन इज शिफ्टिंग such that the methyl stays. Yes, and there is one more methyl. Yes guys, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है ना कि मिथाइल. ठीक है, इसका देखना है हमें क्योंकि प्रोडक्ट में ऐसे ही दिया हुआ है. In the product it is given like this, so we are shifting a hydrogen hydride over here, not a methyl. Okay, so it is first of all formation of oxonium ion, Prince cyclization and pinacolone rearrangement. Answer is option number 3. Good evening guys who have joined now. Mera jo yes yojana, usually we are having live sessions at 6 p.m. every day. Okay, and there are more sessions just like this thumbnail. You are going to see more on my profile, so please check it out. And today also 6 p.m. we had a session.
चलो, तो ये आज हिंदी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं बिकॉज ये फेब 2022 के क्वेश्चंस हैं विच इन विच द इंग्लिश एंड हिंदी लाइंस वर मिक्स्ड. सो इट्स जस्ट आस्किंग यू, ये जो रिएक्शन हो रहा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दैट? Yes, Shubhadeep, it is first one is easy. Just look at the question again. It is an acetal in the presence of an acetal. You remember acetal hydrolysis mechanism? You always form the oxonium ion when you are breaking the acetal, right? So in the presence of Lewis acid, we have formed the oxonium ion. Then we have done Prince cyclization. What is Prince cyclization? It is nothing. A carbonyl has formed. Okay, ये oxonium ion तो एक तरीके से carbonyl हो गया ना? So onto this the double bond has attacked. बस उतना ही है प्रिंस साइक्लाइजेशन, जिससे एक साइकिल मिल जाती है और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसके ऊपर हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, तो उसको पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोल दिया. ओके, चलो, दैट्स इट. युवराज, आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना रेफरेंस, ओके? बिकॉज जो उसका आंसर है ऑफिशियल आंसर की में वो 4 दिया है, बट एनीवेज वी विल चेक. वी मस्ट ऑलवेज चेक. All right. अभी ये easy question है. You have just one atmosphere of hydrogen, palladium, and what is this CaCO3? What is the role of this calcium carbonate, guys? Anybody? What do we call this catalyst? Yes, इस catalyst को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे catalyst poison भी है? Exactly, it is known as the Lindlar's catalyst. Yes. और ये क्या करेगा? It is going to stop the reduction of alkyne to alkene only. Right. So this alkyne is going to be reduced. Why? Because ये एक bulky group है, guys. This is a bulky group, and that is why this alkyne is not going to basically reach the reagent उसकी bulk की वजह से. That's why this is going to be reduced, and always you are going to get cis reduction, cis hydrogenation, syn hydrogenation basically, giving you a cis alkene. So फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, नॉट टू. टू में तो ट्रांस हो गया ना, ये बर्च रिडक्शन थोड़ी ना है. दिस इज नॉट बर्च रिडक्शन, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. यस मोहम्मद, वी हैड 2 लाइव क्लासेस टुडे. कल नहीं हो पाई थी तो हमने आज 2 सेशन कर लिए. राइट. चलो आगे चलते हैं. ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. The reagent that will affect the following selective conversion is. Okay. There are 4 options here.
All right. Yes. Very, very simple, isn't it? तो ये हमें क्या दिख रहा है? वी सी OPMB has become OH. That is PMB ether deprotection. And you know it is very popular कि जो DDQ है, this is very very popular for PMB ether deprotection. These are also ethers, benzylic ether. ये carbamate हो गया है, right? This is different. OBZ is like OCH2PH, right? सॉरी कार्बोनिल मॉलिक्यूल राइट और ये है methoxide ये acetate है PMB ether is directly going to be removed and that gives you an alcohol as well as the other portion is going to become aldehyde अब इसके बाद में अगर पूछ ले that what extra are you getting so this PMB paramethoxy benzylic group this is going to convert to CHO isn't it so yeah this is the answer DDQ अच्छा एक और चीज युवराज आपने जो मुझे रेफरेंस भेजा है ना उसके अंदर टेम्परेचर कंडीशंस में थोड़ा सा चेंज है सी इट इज डाइथाइल ईथर एंड -25 डिग्री सेंटीग्रेड विद द सेम रिएजेंट ठीक है और इसके जो इसके साथ जो रिएजेंट है दैट आल्सो हैज पोटेशियम हाइपोफॉस्फेट आई गेस तो थोड़ा सा डिफरेंट माइनर डिफरेंस है दिस वाज गिविंग यू फ्रॉम द बुक इट इज गिविंग यू 2+2 साइक्लो एडिशन ठीक है और जो हमने क्वेश्चन किया था इट वाज अ PYQ CH2Cl2 यूज हुआ था एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सो आई थिंक कि ये थर्मल कंडीशन में 4+2 साइक्लो एडिशन इज टेकिंग प्लेस जो कि ऑल्सो आंसर की में है पर मैं एक बार फिर भी दोबारा चेक कर लूंगी okay just for more clarification I'll check and inform you once again okay and if there are any changes I will inform you all about it थोड़ा सा डिफरेंस है इस टेम्परेचर का डिफरेंस है जिसकी वजह से मुझे डाउट हो रहा है कि हो सकता है ये 4+2 ही है okay anyways we'll see चलो major product formed in the following reaction next question easy one yes guys this is also very easy Yes, in the second step, it is Suzuki coupling. What about the first one? Simple hydroboration. So, कहाँ हो रहा है hydroboration, guys? To this alkene or to this alkene? Definitely the one which is less hindered because this is 9 bbn that we are using. So, hydrogen is transferred here, let's say, and the 9 bbn Bora bicyclononane part is going to be added on the least hindered carbon यहाँ पे terminal पे ठीक है next step is just a Suzuki coupling reaction where you are taking phenyl bromide simply and in the presence of a slight basic medium you are just doing a coupling reaction तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये आगे चलते हैं अच्छा ये देखो अगेन okay you have to just select the correct sequence of reagents in this one yes Yojana exactly outer side
All right. Again, very simple. ये तो IIT जैम वाला स्टूडेंट भी आराम से आंसर कर देगा. All right. So let's see. Let's try option number 1. What does it say? Active MnO2. ये क्या करेगा? Active manganese dioxide. It is used chemoselectively for the oxidation of allylic alcohols. तो which one is an allylic alcohol? ये allylic है और ये क्या है? Secondary. So more priority to secondary allylic. ये हो जाएगा convert to ketone. All right, first step. What happens in the next step? Step number 2. Methyl iodide and sodium hydride, which means you're having a base to remove a proton. Which proton will be removed? Sodium hydride is naturally, it is more basic as compared to hydroxide or any other. ये इसको हटाने के लिए है यहाँ पे. O minus is going to happen and then methyl iodide पे attack करके ये बन जाएगा ether. So the secondary alcohol is now protected in the form of ether. All right, what is third step? Guys, third step again you see a base and you see the possibility of formation of sulfoxonium ylide. Yes or no? ये बनेगा ylide because there is a base and there are 3 methyls on sulfur along with oxygen. So this is sulfoxonium ylide in the Korey-Chaykovsky reaction. ये क्या करेगा? 1,4 addition it is going to do. When it does 1,4 addition, यहाँ पे attack करेगा. It does cyclopropanation and not epoxidation. So you are going to get cyclopropanation like this. All right, there is cyclopropanation over here. OMe. All right, got it. Now what? अब इसके बाद में क्या होगा? Once the cyclopropanation has happened, in the last step you see again you are having a base and you have the possibility of another ylide formation. ये देखो मिथाइल के ऊपर यहाँ phosphorus has a positive charge, so these methyl protons are acidic in nature, and that is why you are going to have CH2 minus PPH3. What is this? This is going to give you a Wittig reaction, nothing else. तो ये जो carbonyl है, this is going to be converted into an alkene. That's it. So Wittig reaction. So what did we have? Allylic alcohol oxidation to ketone, followed by alcohol protection to ether, followed by Korey-Chaykovsky reaction to give you cyclopropanation, followed by Wittig reaction to again give you this alkene. Okay. एग्जैक्टली सो इसका आंसर 1 ही है. यही सीक्वेंस सही है. चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, अनदर गुड क्वेश्चन. मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. ये मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी करवा दिया था एक बार. ABCD, दीज आर द ऑप्शंस. ओके, हाँ ये खाली दिखने में डरावना है, बाकी ये काफी इजी है. सिर्फ आपको पहचानना है कौन से फंक्शनल ग्रुप है. यस योजना.
हाँ यस शुभदीप, सेम क्वेश्चन रिपीटेड इन अ मोर इलैबोरेट वे, तो ये डरावना बन गया फिर। नहीं तो सीधा सीधा क्वेश्चन, वो एक्चुअल में ये पुराना है, वो नया क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइड एंड रिपीटेड इन द रिसेंट पेपर, इजंट इट? ये ज्यादा पुराना है। यस गाइस, व्हाट इज द आंसर? इतना डरावना है कि समझ नहीं आ रहा है, इज इट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस शिवानी, बिल्कुल नेट का है। अच्छा, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, दिस big molecule over here? What is this? One equivalent of what is given? Yes. Have you identified the reagent? Yes, guys, comment. If you have identified the reagent, then it will become easy to, yeah, it is DDQ. Now, what does DDQ deprotect? All of these are protected alcoholic groups. DDQ किसको deprotect कर रहा है? अभी अभी हमने देखा था PMB ether. Now, what is PMB ether? Yes. Where is PMB ether out of all of these? Yes. All right. ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छा लगा, isn't it? चलो. Where is PMB ether? You see this one over here. This is para-methoxybenzoyl. ठीक है? Para-methoxybenzoyl. Okay. PMB ether is para-methoxybenzyl. ठीक है, ये क्या है? पैरामिथॉक्सी. सी दिस पैरामिथॉक्सी इज गिवन टू कंफ्यूज यू. ये भी पैरामिथॉक्सी है, बट दिस इज पैरामिथॉक्सी सिंपल फिनाइलिक ईथर, नॉट बेंजाइल. एंड दिस इज पैरामिथॉक्सी बेंजाइल ईथर. सो दिस वन इज पैरामिथॉक्सी बेंजाइल. ठीक है, एंड दिस इज अ सिंपल बेंजाइल ईथर, नो पैरामिथॉक्सी. सो कौन डी प्रोटेक्ट होगा? दिस वन. So in the answer, you just have to see that this is removed. A is not correct, B is not correct, C is also not correct, D is correct. This one is removed. This was paramethoxybenzyl. Yes, D is the correct answer. Everyone gets it? Yes or no? बहुत easy था ये तो. Yes? Okay? Chalo, shall we move onwards? Very easy question. Option number D is the correct answer. All right. Again DDQ. Major product A and B formed in the following reaction. Again you have DDQ. Let's see what we can do with this. Another year question.
So DDQ is eating our heads, isn't it? See, you have again paramethoxybenzyl ether. ठीक है, वो तो हो गया. Yes, योजना, very good. देखते हैं क्या हो रहा है. This is paramethoxybenzyl ether. So from here, this whole group is going to remove it. This carbon is going to become a CHO, and this part of the molecule where we are having the alcohol, this becomes free. तो ये तो बन जाएगा OH, and the other portion, this portion has become CHO. Now in the question we have got A. A में हमें देना है PHIOAC whole twice. How is it like? It is like this. Iodine has got two good leaving groups, acetates. Okay. So let's say this alcohol attacks over iodine and one of the acetate becomes free. If that happens, we have OI pH OAC like this. All right, we have one acetate free. One of the acetate is free now. What can we do about it? Acha, methanol is also given. अच्छा, मैं वही सोच रही हूँ कि मेरा गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन अल्फा पोजीशन पे लिख दिया, बीटा पोजीशन पे नहीं लिखा है. So sorry, this OH is going to be over here. So sorry. All right. Yes, and it is not directly, I think it is not directly attacking from the oxygen end. It is doing para substitution with respect to this. ये para के ऊपर से अटैक कर रहा है. Alright, I guess that this methanol is reacting with this molecule such that one of the methoxide is being replaced. That is why it is attacking over methyl. Let's say this is only one possibility. अगर ये इस तरीके से अटैक करे तो, या फिर हम एक और काम करवा सकते हैं. Because the answer is option number 2 only. This methoxide is attacking over the para position with respect to this alcohol. Okay, so I guess we are making this oxygen attack over iodine, and somehow this methoxide is attacking on the para position. Somewhat like this. ठीक है, इसका आंसर तो B ही है, but it's I guess going like this. देखना पड़ेगा मुझे ये वाला एक बार. ठीक है, how I just forgot this one कि ये किस तरीके से अटैक कर रहा है यहाँ पे. I'll just check this and tell you. And yeah, this was our last question for today. आज के लिए हम इतना ही करेंगे प्रैक्टिस, और काफी इजी क्वेश्चन है ये भी. All right guys, so tomorrow again we are, क्योंकि आज हमारा 6 PM वाला सेशन पेरीसाइक्लिक था, so tomorrow again we are going to continue from पेरीसाइक्लिक tomorrow 6 PM. Okay, all right, yes, okay, chalo, I'll see you all tomorrow then. Have a good night guys. We'll discuss the remaining questions tomorrow.
नहीं नहीं, 8:30 बजे रोज नहीं आना है। आज तो ये बस ऐसे ही एक्स्ट्रा सेशन था क्योंकि मैं कल नहीं ले पाई थी। रोज का टाइम 6 PM है। ठीक है, so you have to be there at 6 PM. ओके गाइज, एक बार ना ये प्रोफाइल खोल के देखो ना मेरी, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ये जितने भी थंबनेल्स है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए, जो भी आपको टॉपिक भी पता चल जाएगा कि आपको क्या रिवाइज करना है, तो आप रिवाइज करके भी आ सकते हो, जिससे कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी 6 PM डेली। ओके, मैंने नेट आफ्टर एमएससी क्रैक किया था और मैं 4 से 5 घंटे पढ़ती थी अलोंग विथ टीचिंग। आई वाज टीचिंग ऑल्सो। सो आई यूज टू टीच IIT JEE एंड वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन वैसे ही प्रैक्टिस हो जाते थे। बट अलोंग विद दैट आई ऑल्सो यूज टू स्टडी 4-5 आवर्स जो हाई लेवल का कंटेंट है, जैसे कि जो एडवांस्ड कंटेंट है जो हमें पढ़ना पड़ता है, अलोंग विद सिंपली प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। दैट टुक मी 4 to 5 hours per day, and I was teaching for 4 to 5 hours, and I was studying for 4 to 5 hours after my MSc. Okay, so yeah, that's how I did it. क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता तो सेल्फ डाउट हो जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी नहीं कर पाती कई बार। उसमें सेल्फ डाउट होने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें जस्ट रिवीजन की जरूरत है। So, after let's say you have got enough knowledge, you will already build that self confidence कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा टेक्निक की जरूरत है या फिर let's say रिवीजन की जरूरत है, वो मिस आउट हो गया है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। You don't have to panic. Okay, Shubhadeep, there is nothing wrong with it. ओके, कोई गड़बड़ नहीं है गाइस, सब लोग ऐसे ही चलते हैं। आपके अलावा जो भी एग्जाम में बैठे हैं, दे आर ऑल्सो अंडर द सेम impression, yeah, they're also under the same pressure. So I would suggest everyone to not worry about these little things, because this is a journey. ये जो एग्जाम हम क्वालिफाई करते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ये एक जर्नी है एक तरीके से। दिस इज अ प्रोसेस in which you are refining yourself. Okay, so just let it be. Whatever problems you are facing, just keep your vision straight and just keep working on that. Things will become better automatically. आप आज कहाँ पे हो और आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप 20 दिन बाद कहाँ पे हो, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। जस्ट डोंट ट्राई टू लुक बैक एट एवरी स्टेप, जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। आप जब पहुंच जाओगे, यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, तो आपको अपने आप दिखेगा कि बहुत डिफरेंस है। ओके, यस बिल्कुल युवराज, आई होप कि ये सभी को हेल्प करे। and see, this is all I can do. I can just make you solve maximum questions. ये जो time है before your exam, whatever days we have left, I promise I will keep you updated with all the good questions जो भी CSI नेट के हैं, अच्छे वाले लेटेस्ट वाले questions है। We are doing all the latest questions, ठीक है। एंड सम ओल्ड क्वेश्चंस आल्सो आर नेसेसरी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पुराने पेपर्स में भी। So I'll make sure that I'll take all of those questions, and from my side, I am making sure that you crack the examination. Don't worry, just keep working for it. कभी कभी लगता है जो क्वेश्चन हमसे नहीं होगा वही नेट में आएगा, वो तो होना ही है ना, वो तो होता ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जो क्वेश्चन आपसे यहाँ नहीं हो रहा कई बार एग्जाम में हो जाता है, जो क्वेश्चन आपसे यहाँ हो गया कई बार एग्जाम में नहीं होता है। सो इट्स लाइक गैम्बलिंग, ठीक है। यू डोंट नो कि अगला पासा कौन सा आने वाला है, सो इट्स लाइक गैम्बलिंग। सो ठीक है, लेट्स जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर वी हैव स्टडीड। अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे और तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो राइट, डोंट वरी गाइस, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। इतने टाइम में तो पूरी दुनिया उलट पुलट हो सकती है हमारी। अभी तो हमने, अगर अभी अभी भी हमने अगर प्रैक्टिस शुरू कर दिया ना, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट आवर प्रैक्टिस बिफोर योर सीएसआई नेट एग्जाम। 27-28 को अगर एग्जाम है, 26 से 28 को एग्जाम है, तो बहुत टाइम है। वी विल बी एबल टू लाइक कैच अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, चलो
So I will see you all tomorrow, 6 p.m. Till then, bye bye. Take care of yourself and keep practicing. Most welcome, Mohammed. Most welcome, everyone. Have a very, very good night, guys. Okay, take care of yourself and keep studying, keep practicing. Bye, everyone.